Topic for today is chemical changes and the difference between physical and chemical changes. You already know the differences between physical and chemical changes. Alright, we have studied this in our previous class. Okay, so let's start off with today's lesson. This is the very first question, that how do you know when a chemical change has occurred? In the previous class, in grade 7, you studied a topic in which you studied that what happens when metals they react with acids and what are the products which are formed, and you also you in that chapter it was also told that what happens means how can you deduce or how can you conclude that a chemical change has taken place. There were five basic points to tell that a chemical reaction has taken place. One was change in color. A new substance forms. What happens when a chemical reaction happens? When a chemical reaction takes place, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स बनती है, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. न्यू सब्सटेंसेस जब बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, तो हमें कैसे पता चलता है कि न्यू सब्सटेंसेस बने हैं? तो हम तो देख नहीं रहे जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हमें ऐसे पता चलता है. नंबर वन इज चेंज इन कलर. इफ यू ऑब्जर्व कलर चेंज. Precipitate. जी, The format of precipitate, the evolution of gas, or a color change. yes, exactly. So if you observe a color change, if you observe some cloudy precipitates forming, precipitate कहते हैं cloudy material को. जैसे sand जब आप water के अंदर mix करते हो तो sand के precipitates बन जाते हैं, मतलब आपको उसके particles उसके अंदर नजर आ रहे होते हैं. ठीक है, उसे precipitation कहते हैं. तो precipitate formation is another example of this, that if precipitates form, then we can also tell that a chemical reaction has taken place. Color change, it means that a chemical reaction has taken place. When a gas is evolved, okay, when a gas is formed in the form of bubbles or in the form of heat, or sometimes you can see the vapors uh, over in your test tube or in your beaker when a chemical reaction occurs. All right, and pH change. If a chemical reaction takes place, the pH of the solution is going to change. pH is that how alkaline or how acidic the solution is. All right, so a change in pH, if something was acidic before and after the reaction has become alkaline, or firstly it was alkaline and after the reaction it has become acidic. So this can also tell, we can also tell that a chemical reaction has taken place. So these are a few points. There are a total of 5 points which tell that a chemical reaction has taken place. All right. Now let's move to the next slide. Okay, इसके अंदर भी ये पांचों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या indicators हैं chemical change के. ठीक है. Okay, so this is the first question. Matter can be altered in different ways. For example, what are all the ways you can change a piece of binder paper? You have a piece of paper, you have a page. How can you change it? How can you change its shape, its structure? What can you do? You can, someone is saying, and use this someone. Okay, Rahma is saying you can cut it, you can burn it, you can fold it, you can put it in water. Excellent. Exactly. If you will cut it, but यहाँ पे अब आपने इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें. कटिंग, फोल्डिंग, ये दोनों चीजें, या पुटिंग इट इन वाटर, ये उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं करती. ठीक है,
पेपर की जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है, बट यू आर कटिंग द पेपर, ठीक है। उसके अंदर के कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होती, इसका मतलब इनमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, ठीक है। लेकिन इफ यू बर्न द पेपर डाउन, then a chemical reaction happens. Why? Because when paper is burned, it's burned. It will become just soot. Okay, and when it is going to become soot, तो आप उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब पेपर में। तो the chemical change is actually an irreversible change, okay, which you cannot reverse. जबकि changes in state आप reverse कर सकते हैं। Okay, so Fatma Sarwar is saying that paper chemicals designate a group of chemicals. नहीं, यहाँ पेपर केमिकल की बात नहीं हो रही फातिमा। दिस आंसर इज नॉट करेक्ट, इट इज इररेलेवेंट। इन्होंने सिर्फ ये पूछा है जस्ट टू चेक योर नॉलेज दैट पेपर को आप मुख्तलिफ किस्म क्या ऐसे प्रोसेसेस उसमें कर सकते हैं जिससे उसकी शेप चेंज हो जाए या उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ ये गलत है, द आंसर इज रॉन्ग। ओके, सो आई एम स्टिल वेटिंग फ्रॉम Abiha, Zumar, Bisma, and Leah. Please write down your answers. Girls, write down the answers quickly. खदीजा कहाँ गई है? अब ऑनलाइन की पहले चली गई। Okay, so Bisma is saying you can crumble it. Wow, yes, that's correct. You can crumble it. You can cut it, you can burn it, you can fold it, you can put it in water, you can scribble marker on it, and or you can scribble a pen on it. Yes, that's correct. You can scribble a marker, you can scribble a pen, you can cut it, you can burn it, you can fold it. So basically यही हो सकता है। जुमर ने अभी तक आंसर नहीं दिया। खैर, आई विल वेट फॉर योर आंसर। आप लोग आंसर्स कर दीजिए। मैंने दोबारा नहीं किया अपना आंसर। ओह अच्छा, हाँ जी। कटिंग, बॉइलिंग, हीटिंग, अच्छा, फोल्डिंग, वेट पेपर, वी कैन आल्सो चेंज शेप। हाँ, दिस इज फाइन। अच्छा, अगर आप बॉईल करो पेपर को पानी में डाल के तो क्या होगा? हम उसके जो है जो हाफ मटेरियल है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो उसका सरफेस है दो तीन सेकेंड्स के फिर वो उसके रह जाएंगे। ओके, तो उसकी उसकी कंपोजिशन में तो फर्क आएगा। मैम कट हो जब होएगा जब उसको दोबारा हम लोग मैम अगर उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे वो ठीक अपने दोबारा रियल शेप में नहीं हो सकेगा, बिकॉज कट करके अगर हम जोड़े टेप लगाएं तो वो पहले वाली चीज तो नहीं ना रहती। नहीं, वो तो ठीक है, कटिंग से पहले वाली चीज नहीं रहती, लेकिन अगर आप उसे कट कर रहे हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं ओके होती। मैम। रिवर्सेबल नहीं है कटिंग, बट दैट समथिंग एल्स। नो डाउट के कटिंग रिवर्सेबल नहीं है, लेकिन कटिंग एक केमिकल रिएक्शन भी नहीं है। देखो ना, सिर्फ शेप चेंज हो रही है, उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, उसके अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बने हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आया, कोई गैस नहीं बॉल हुई, कोई उसके अंदर पीएच चेंज नहीं आया, एवरीथिंग इज द सेम। सो कटिंग
Okay. So, girls, I was saying that practically cutting the paper is impossible. You cannot cut the paper down. अच्छा, cutting नहीं, melting की बात हो रही थी, sorry. Zoomer said that you can melt, cut, color, and fold the paper. Okay, so that I was replying to her that you cannot melt the paper. Practically, melting the paper is almost next to impossible. Melt आप उसे कैसे करेंगे? आप उसे आग लगाएंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है? तो मेल्टिंग नहीं हो सकती। अब देखो ना, लकड़ी है, बेसिकली पेपर तो लकड़ी से बना हुआ होता है, तो लकड़ी कट तो सकती है, बर्न भी हो सकती है, लेकिन मेल्ट नहीं हो सकती, ठीक है? तो मेल्टिंग इज रॉन्ग। You cannot write that you can melt the paper. Okay? और अगर फॉर एग्जाम्पल आप कर भी रहे हैं, तो melting, boiling, condensation, these are all changes in states of matter. All right. So गर्ल्स आप आगे आगे क्यों चलती जा रही हैं? प्लीज आगे खुद मूव ना करें, ठीक है? Let me follow you. Alright, so physical versus chemical changes. Rahma is saying that chemical changes are irreversible while physical changes are reversible. Yes, that's correct. Up to some extent. Bisma is saying that crushing a can, melting an ice cube, boiling water, mixing sand and water, breaking glass, dissolving sugar. ये क्या चीज, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताना है ना आपने, तो ये जितनी आपने एग्जाम्पल्स लिखी हैं बिस्मा, which of them is physical and which of them is chemical? I think that all of them are physical changes. Examples of physical changes. Okay, these are examples of physical changes. Thank you for your answer. Haika is saying that in a chemical change, the object cannot be obtained back, and physical change, the object cannot be obtained back. ये क्या बात हो गई? Physical change में object can be obtained back, chemical change में cannot be obtained back. Okay, so make it. अच्छा, ठीक है, आपने करेक्ट कर दिया, थैंक यू सो मच. Then this my saying chemical changing examples include burning, cooking, rusting, and rotting. Yes, that's a good example. Alright, so then Fatima Server is saying that a chemical change is also a chemical reaction. Yes, and physical change results from and as an example of एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज मैंने एक्ट लिख दिया था, मैंने लिख दिया था. अभी हर बात. Okay. Zoomer is saying in physical change there's a difference in appearance, smell, their display. Chemical changes can be one substance combined with another to form a new substance. Yes, exactly. You're right. Okay, so chemical change is a permanent change. A physical change affects only the physical property. That's correct. Okay, so let's move to the next slide. Alright, so let's explore. Ma'am, I was unable to learn. It's okay. It's alright. No problem. Alright, so chemical changes example. Now, so let's watch a few examples of a chemical change. What is a chemical change? Next, I'm going to show you a video, and in that video, you will observe some chemical changes. What is a chemical change? You will come up to the definition of a chemical change. Okay, so this is the video.
Okay, so anyone who can tell me what is going on over here in this video? Girls, क्या हो रहा है इस वीडियो में? ये इसने जो डाला है इसमें ये क्या है? और इससे बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं किस चीज के फॉर्म हो रहे हैं? ओके मैम ये पहले की हुई है हाँ यही वाली, है जी ना? ये पहले भी कही हुई है हमने, सेम यही नेल कोड वाला जो है। पहले कब? मैम पहले भी एक दफा किया हमने, नहीं, ये नहीं अपने किया। लास्ट वीक की थी मैम, तभी तो सारा कुछ सेम सेम है मैम, हमने की हुई है। नहीं, ये नहीं किया हमने। मैम मुझे याद है अच्छी तरह से, हमने वीडियो भी यही वाली देखी थी। बेटा केमिकल चेंजेस का टॉपिक ही मैं आप पढ़ा रही हूँ, केमिकल और फिजिकल चेंजेस वाला। पिछले वीक में तो मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैम पता नहीं बस क्या आपने शायद करवाया, क्योंकि मुझे सारा वो लग रहा है, क्योंकि हमने ये किया हुआ है। मैंने ये हमने 7th क्लास में किया है, इस क्लास में 8th में नहीं किया। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन इसीलिए ना, ये आई एम जस्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक्स ऑफ 7th राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। Can anyone tell? केमिकल चेंज हो रहा है बेसिकली इधर। ठीक है, आपके पास एक इस वीडियो में एक जार है ऑफ वाटर, ऑलराइट, एंड ये जो इन्होंने इसमें डाला है ये एक वायर है। ठीक है, जब वायर इन्होंने इसमें डाली है, पीछे से इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, द वाटर इट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, and the chemical reaction is known as electrolysis. Right? Electrolysis is a process in which the molecule of water is going to be broken down into hydrogen and oxygen by passing electric current through it. Okay? So ये जो bubbles हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के bubbles हैं जो इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जब आपने इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इन्होंने इसके अंदर से पास किया है। ठीक है, so the process is known as electrolysis. Electrolysis, I guess. Now this is a video in which they are showing you that an apple is rotting. This is an apple and it is rotting. Alright, फंगस लग गया है इसके ऊपर और फंगस जो है इसको अफेक्ट कर रहा है। अब इन्होंने इसके अंदर इसके इन डेप्थ में दिखाया है, ये देखें, that how fungus it grows inside on the surface of this apple. ऊपर से हमें जस्ट वैसे नज़र आ रहा होता है, लेकिन बेसिकली फंगस की रूट्स एप्पल के अंदर गई हुई होती हैं और वो अंदर से एप्पल में से सारे न्यूट्रिएंट्स ले रही होती हैं। दैट्स व्हाई वो वहाँ से ब्लैक हो जाता है जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट, सो नेक्स्ट योर क्वेश्चन, then how do you think that a chemical change can be defined? You have to define a chemical change over here. So Rahma is saying that chemical changes include formation of bubbles and rusting. Again, I'm telling you that you will write all the indicators of the chemical change over here. Alright, so Fatma is saying that a chemical change happens when one substance is transformed into one or more different substances. Yes, exactly. For example, when iron rusts. See, rusting of iron वाला कौन सा chemical reaction है? The iron, it is going to react with oxygen and it's going to form iron oxide. Alright. Okay, so Rahma is saying formation of bubbles. ठीक है, that's fine too. रामा, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स की जगह अगर आप लिखो प्रोडक्शन ऑफ गैस, दैट वुड बी मोर appropriate for this. Okay, change of odor,
Change of color, for example, silver to reddish brown when the iron rusts. Change in temperature or energy, such as production or loss of heat. Yes. Change of odor, change of color. Yeah, repeat कर दिया है. These are all different indicators of a chemical change. Okay, so we've got answers from Fatma, Haika. Okay, so Haika is saying that in a chemical chain, new substances are formed and there is a change in color, pH, and formation of gases. Production of precipitates भी होता है और इसके अलावा change in color, production of gases, change in pH, formation of precipitates था. Okay, so Bisma is saying that a chemical change is irreversible. Examples of chemical change include cooking, burning, rusting, rotting, color change, formation of precipitate, formation of gas, temperature change. Yes, exactly. Temperature change. And change of odor. Odor is like the smell, it changes. Because properties of the new substances they are different from the properties of the previous substances. That's why it changes. Alright, so let's move to the next slide. Do you think burning a piece of paper produces a chemical change? Yes, and most of you have done it right. It is a yes. Burning paper is a chemical change. Alright, so now let's learn the difference between physical and chemical changes. I have a video over here which tells you about the differences between physical and a chemical change. Everyone can play this video on their devices because even if I play it over here, you won't be able to listen to it. So please play this video on your devices to check out the differences between physical and chemical change. मैम देखी है वीडियो. Okay. So physical और chemical changes का फर्क अब आपको पता चल गया. Physical change is usually changes in states, नहीं. all right, and chemical change is the change in the chemistry, all right. So we have a quiz here. Haika, you have attempted one question number 1 and 2, and not third one. All right, so
Ma'am, it's done. Okay. Okay, suppose just अब लिया नहीं है यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है क्या बात है. Okay, Ji. So next we have another question. Write down three indicators that suggest a chemical reaction change has occurred. You can add a picture to it. No need to draw it. Please just add pictures of an indicator. For example, color change. So you can add a picture over here for color change. Girls, जल्दी करें. Okay, so Fatma server has submitted. Okay, burning, boiling. Okay, that's good. You can also add pictures from internet over here. चलें आप देखते रहिएगा. Let's go to the next slide. All right. So again, we have a quiz. I can't see the questions. अब मुझे पता है मैं कर सकती हूँ पर मेरा दिल कर रहा था कि ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so is burning paper is an example of a chemical change? This is the first question. Second question is that is rusting gate an example of a chemical change? And is broken glass an example of a chemical change? Is moldy bread an example of a chemical change? Is burning paper an example of a chemical change? Okay, so it's interesting. By the way, burning paper is an example of a chemical change. Rusting gate is also an example of a chemical change. Then I'm reading out Rahma's answers, and they're almost all correct. Broken glass is an example of chemical change. No, yes, that's a no, it's not. Moldy bread. Moldy bread is when fungus it attacks on a bread. That is moldy bread.
Okay, and it is an example of a chemical change. It chemically absorbs all the nutrients from the bread and leave it with nothing. So we have three questions here. Four. फातिमा सर्वर में नहीं है because सर्वर जवाब दिया. Okay. So, हाँ जी. लिया ने ज्वाइन करके छोड़ दिया है या नहीं पता नहीं. All right, so that's correct. Now let's evaluate what we have learned. Your friend thinks that melting butter is an example of a chemical change. What would you say to it? In your answer, explain the definition of a chemical change as well as the indicators that suggest one has. Alright, so Rahma is saying that in when butter melts, in a chemical change, a new substance is formed. When butter is melted, no new substance is formed, so it is just in the change of state. That's correct. It's just the change of state and nothing else. So write it down, answer, girls, please. This is your classwork actually. इसके बाद मुझे कोई ये ना पूछे कि मैम आपने क्लास वर्क देना है क्योंकि ये क्लास वर्क ही है. Girls, I've got answers. Okay, so Haika is saying no, chemical bonds are broken and formed in melting butter. Very good. That is a very good answer. Melting butter is only a physical change. Yes, exactly. It's change in state from liquid to solid and nothing else. All right. So Rahma Zumar is saying no, it's a physical change because it can freeze again. Yes, that's so sweet of you. It can freeze again. Okay, so BI is saying when we melt butter, no chemical reaction happens because no new substance is formed. Yes, correct. That's also a good answer. Alright, so let's move to the next question. Alright, so how confident do you feel in your ability to determine if a chemical change has occurred? You are very confident that you will deduce that a chemical change has occurred. If it is very confident, then it's A. If you're confident enough, then it's B. If you're not confident at all that आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आई, then it's D. And if you're partly confident, means it's somewhere in between confident, means you have still have some confusions. So if you have some confusions, then you can go for C. Alright, girls. So for now, let's take a look. Yeah, we have to do one more question and then lesson will be over. Okay, so the next question is that what questions do you still have about chemical changes? If you have any questions, if you have any confusion, can color change be considered as a physical change? No, because color change will be appeared in just
in a case where a new substance is formed. ठीक है, रिएक्शन होता है, उसके रिजल्ट में कलर चेंज होता है, क्यों? अब जैसे कि रस्टिंग की एग्जांपल आप ले लें, वैसे आयरन का कलर सिल्वर है, ठीक है, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन its color becomes brick red. Okay, it rusts. Rust का कलर चेंज, रस्ट का कलर ब्रिक रेड है, दैट्स वाई कलर चेंज आता है। ठीक है, तो कलर चेंज फिजिकल चेंज के तौर पे कंसिडर नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस आप मतलब खुद कलर चेंज कर। अब अगर आप फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर कोई कलर डंप कर देंगे और उसे मिक्स कर देंगे तो वो केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ कलर ही को डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कलर चेंज का मतलब ये है कि अगर उसका कोई और पहले कलर था और उसके बाद जब रिएक्शन हो गया तो उसका कलर चेंज हो गया मुकम्मल तौर पे। तो फॉर एग्जांपल पहले रिएक्शन से पहले उसका कलर येलो था और फिर रिएक्शन के बाद कलर हो गया रेड। This is a color change which we are talking about. Simply mixing the color in water or something like that, it's not a chemical change. ठीक है, कलर चेंज का मतलब ये है बेसिक। Okay, so Zumar is saying that she has questions in her mind all the time. So if she will have questions, she is going to tell me. So is it clear, Rahma? यहाँ पे जिस कलर चेंज की बात हम कर रहे हैं वो कलर चेंज इज बेसिकली a change from one to another color, not mixing the colors into water.